Okay, hi everyone. So today we have a topic of group discussion, and the topic is going to be role of critics in our life, right? So this is a topic which I'm giving you for group discussion. One of you will come for the introductory part. One of you have to conclude it out. In introductory, I'm giving you explanation. You have to go for a very generic one, like what is the role of critics, which areas they actually affect it out. And then you have to give your opinion. Are you in the favor of it? Like you find it as a positive role, you find it as a negative role, right? So you can go for one perspective. In group discussion, you can also change your perspective. Like it is not important that you have to stick towards the positive points only. You can go to the words and negative points also in between if you find. Now you have to favor someone's, you can say arguments, you have to disfavor someone's. So that would be your part. And at last, one will come to conclude it out. When I'll say that, yeah, discussion is over, one of you will come to conclusion. And conclusion is the easiest part. You have to conclude everyone's like points, right? And give with a very generic one. You have to be diplomatic in that. You don't have to favor it out that it's a very good thing to have critics in our life. It is a very bad thing to have a critics in life. Like they have a good role, they have a bad role. So you have a, like every coin has two sides. So you have to go for a balanced approach. Clear with it? Everyone? Role of critics in life, ma'am. This is the topic, ma'am. Yeah, Shailesh? Role of critics in life. Role of critics in our life. हाँ, क्या role है critics का? Okay. And you can go for Hindi also, English also, up to you. Okay, you can change your. There's no language barrier as such. Whatever you are comfortable in, that you have to start and that you have to end. Introductory के लिए कौन आना चाहता है? First, tell me that. Okay, ma'am. I will start. Okay, Shailesh, you just see it today. So, Anima, I'm giving you the chance for introduction, right? And conclusion के लिए. Ma'am, I would like to conclude. Okay, Hemant is going to conclude. Now that you have to channelize your approach, and it is not about you get good points for introduction and ending, but the different, you can say more the perspectives. I'll just tell you at the end what you did, where you can say have some drawbacks of each and every individual, right? It's 6:23 by my side. I'll start at 6:25 exact. 2 minutes, brainstorm your mind as much you can. Okay, go ahead.
Yeah, okay. Swarnima, you can start. Okay, ma'am. Good evening, friends. I'm Swarnima, and today's topic for discussion is role of critics in real life, which is a very relevant topic for all of us. Self-introspection is very important for each of us, but a third-person opinion can give us a broader view of our life and sometimes can enhance our skills also. But since, like a coin, everything has two sides. So having critic can be good, can have positive or negative impacts. Like negative impact can be that we being too hard on ourselves by taking the criticism in the wrong way. So now I believe that we will have a very good discussion, and I open the house for the discussion. Okay, so as you said, Swarnima, I agree totally with you. Critics can be of two parts. It can be motivating and also demotivating, as it depends on who gives us critics. Means the friends, family, and our loved ones gives critics to us to improve ourselves and to rectify our mistakes and tell what we are doing wrong. But the critics given by an unknown is not so important to us because and it can be demotivating to us, so it's on us how we take it and from whom to take that and whom to take seriously. So according to me, critics are important, but we should know from whom to take them. I completely agree with my friend. क्रिटिक्स अगर हमारे नेगेटिव पॉइंट को हाईलाइट करता है तो ये हमारी पर्सनालिटी को भी हम उसको इंट्रोस्पेक्ट करके सुधार सकते हैं, ये हम इसे पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। अगर यही कोई एनिमी या कोई हमसे जो इच्छा रखता है वैसा कोई पर्सन करेगा तो वो हमें डिमोरलाइज करेगा, हमारे फ्यूचर रिजल्ट को भी अफेक्ट करेगा और जो हमारे अपकमिंग रिजल्ट होंगे उनमें वो सब दिखेगा। तो हमें सोच समझ के क्रिटिक्स को अडॉप्ट भी करना है, अनलेस ये हमें स्ट्रेस बढ़ाएगा और ये हमारे अंदर नेगेटिविटी को एनहांस कर सकता है। सो आई कम्प्लीटली एग्री विद माय फ्रेंड। I think the critics are much more important. If the person is, if we take it in right direction, such as it helps to guide your path as well as direction where you want to be, and it adapts your skills as well as development, and helps. And as you all said, it helps in self introspection, and we always can learn something new from the why they are telling on. I think this much is But I also think that the role of critics is age dependent, since we can observe that the kids and teenagers don't take criticism in a positive way. Their parents give them positive criticism, but they take it in a negative way, mostly because of the age factors. So it's age dependent as well. Yeah, but actually, critics, even it is age dependent or age independent, critics always ensure us to be disciplined actually. So the critics helps in many ways. Like, see, now it's a group discussion is going on. So how does critics help here? It helps us to maintain a balanced discussion between like considering all the viewpoints of everyone. If there were no critics here, what happens? Everyone would shout like someone would raise the point and it would go like a debate actually. So maintaining critics in this kind of discussions is also important. And Aditi said that it might be motivating or demotivating. It totally depends on us actually. Like if someone says, if you feel someone it's like demotivating, you don't learn from it actually. And if you take it like motivating, so you can improve there actually. Yeah, it is person to it depend on person to person. If the person is taking it positively, then it is well and good for the person. But if it is demotivating to you, I think you should step back from it. But sometimes what happens is like many like if you think our parents itself, sometimes when they are in an angry mode or so, or some our close friends, they will try to demotivate, but we need to learn from that now. What is their Yes. main intention? Their main intention was is to you need to learn from something and you need to go progress in your life. So I feel if anything, if it is demotivating or motivating, you need to be yes. motivated.
You need to learn. अपने मेंटल एबिलिटी को उससे हमें सुधारने में भी It हेल्प मिलता है। depends on जैसे it टीचर का depends on क्रिटिक्स इज organization. गुड, टीचर क्रिटिक्स करता है उसको हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, पेरेंट्स क्रिटिक्स करते हैं उसको भी हम अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करके देख सकते हैं। फैमिली क्रिटिक्स इज गुड, और उसको हमें ये भी देखना है कि हम उसको कितना अपने अंदर निगेटिविटी को उसको वो हमारा स्ट्रेस भी बढ़ा सकता है अनलेस अंटिल वो किसी सही डायरेक्शन में ना दिया। So we Yeah, are I all feel trying to say that identifying real critics in life is necessary. yes, yes. यस यस, एग्री एग्री। Means the critics from known, our loved ones, our family and friends is beneficial to us. So identifying real critic is very important. I totally agree with you. Yes. क्रिटिक्स हमें प्री वार्न भी करता है, जैसे हमारे अंदर कुछ ऐसा कुछ हैबिट है इरिटेटिंग या किस्नोरिंग ऐसा कुछ है तो वो हमें प्री वार्न भी करता है जिससे हम उसे सुधार सकते हैं। आई थिंक क्रिटिक्स के पॉजिटिव काफी अच्छे हैं जो ओवरऑल हमारी पर्सनालिटी को डेवलप ही करता है। अगर हम उसे इतना एबल है कि हम अपने माइंड को उसको प्रॉपरली सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, प्लस माइनस देख के उतना ही अडॉप्ट करना है जितना जरूरी है। ये एबिलिटी And होनी चाहिए हमें ह्यूमन बीइंग में। We should also think that why they are criticizing यस यस यस, so that we can cope up with that and move further on. Every critic, the main thing was like critics are very useful in our life actually. It makes us to learn like how to behave in the society by learning some kind of critics like analytical thinking while see if there was a solution which was going on. So use of critics is like to improve your analytical thinking. That was the main thing, and to know how we behave in the society. So the every critic that we learn, whether it might be in a harsh way or something, it learns something from the society. Like we will learn something from the society or something. आई यस आई एग्री विथ। Hmm. जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लें इसे कि कोई इंसान ज्यादा बात करता है, सामने वाले को बात नहीं करने देता है, अगर उसका कोई नियर बाई फ्रेंड उसे बोलता है तुम सामने वाले को मौका ही नहीं देते रिस्पॉन्स करने का, तो वो एक्चुअली उसमें सुधार करेगा कि हाँ ठीक है मुझे सामने वाले का भी सुन के अडॉप्ट करना है। वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, वो सामने का सुन ही नहीं रहा, इनपुट ले नहीं रहा, इनपुट लेना भी गुड है। इट इज आल्सो गुड थिंग टू टेक इनपुट फ्रॉम अदर्स and improve inside it. Yeah, I think even critics can also give us new ideas, like they can criticize us for a particular thing we are doing, but also give us hint that we are good at something else and we should try our skills there also. So in Yeah. that way, it adds Also, they positively to us. help in our continuous improvement process. Yes. We can As always well. take a critic in a positive way, whether it is Yes. motivating or demotivating. If it is like demotivating, we can improve that skill and it can be positive help for us. So it is it is on the person who is taking it. He should be positive in taking it. And many times we ignore our bad side. We only see the True. positive sides, but critics don't hesitate in telling us that. So it's positive for us. True. जैसे हमारा फिल्म मूवी वगैरह में भी कुछ प्री क्रिटिक्स होता है जो जिन्होंने होते हैं, तो वो हमें वार्न करते हैं कि आपको ये देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, इससे आपको बचना चाहिए, व्हाई डोंट यू वेस्ट योर मनी एंड टाइम। सो क्रिटिक्स इज अ गुड थिंग। Yes. Yes. It also helps in our taking what you can say taking suggestions. As he said that before we going anything watching any movie, we first see the reviews. The reviews are itself stating the critics, what you can say, ratings 5, 4, 3, which will help us to uh, make the consolidate our decision, should we watch or not. यस आई एग्री। But sometimes critics can also make us down if we take their criticism, and if they are not good people, they don't want good for us, and we take their criticism due to any circumstances that we are low or we are having a low phase of life, then it can harm us also. yeah, some Yes, people yes, yes, I agree, some agree. people use this kind of criticism and they'll demotivate us. Yes. At that point of time, we need to understand that yeah, I have this kind of quality, so why I should bother about their words actually.
So he should not think too much about him also. So he need to think that why I should bother, and he need to analyze himself that if I have this critic or some kind of thing, why I should bother. So he should not give too much of attention to the people who used to demotivate. That was also the point. Yes, but इसमें we हम ये all are not perfect, so it might happen. We are just pointing out possibilities. You are इसमें हम right. ये भी ऐड कर सकते हैं कि क्रिटिक्स अगर एक से दो या दो मतलब एक से ज्यादा लोग अगर सेम चीज का ही क्रिटिक्स करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि हाँ वो है भी हमने शायद वो सही कह रहा Yes, है। सिंगल True. पर्सन क्रिटिक्स Yes, इज yes. बैड नहीं अडॉप्ट करना चाहिए हमें। एक से yes, ज्यादा क्रिटिक्स होने चाहिए। Criticism can also be a self-criticism also. Means we can criticize ourselves and find out flaws of ourselves and help ourselves to improve ourselves. So uh, it is not like other persons only can give critics to us. It can be yes. ourselves also. But it यस can यस also be pointed out here that over criticism of self is also a thing which is prevalent, that we get too hard on ourselves for a thing. So हाँ that इस also should be prevented. इस I प्रोसेस में also Yeah, हमें like, true. स्ट्रेसफुल नहीं होना, हमें स्ट्रेस नहीं लेना इस प्रोसेस के And दौरान कि बस हमें इनपुट लेना है उसको and, इंट्रोस्पेक्ट करना है। and Huh. also we have learned in project management that after inspection there is an monitoring unit helps in monitoring the which helps in monitoring so that the project goes in the right way. And if there is something wrong, and then it again comes to the what we can say planning, and after that again corrections, and further the process goes on. It can yes. also help in this way as well. Mm. Yes. Mhm. Anyone else with any other points? You are so lacking. Different fields about the movies, education may, relationships may, actually how they help you out. Talk about different perspectives. यस सर। You can jump on one, like there's a constructive criticism, how it helps you out, right? Then there is a, you can say criticism, which is comment based, criticism, which is, you can say, a proper response based, a criticism to guide you. What are the ill effects of criticism? Criticism can help you out, like the people commit suicide, they are into depression and all that, even they go into that direction. So talk about more of the, you can say, perspectives, think over it, go for good pointers. और स्टार्ट विद डिफरेंट डोमेन्स, एजुकेशनल सेक्टर में कैसे होता है, रोल ऑफ क्रिटिक्स कैसे होता है, टीचर कैसे प्ले कर सकती है, ठीक है। मूवीज में कैसे, अभी बोला था आई थिंक हेमंत ने या वो मनीष ने भी कुछ पॉइंट दिया था इन टर्म्स ऑफ मूवीज, उस पे जाओ। मूवीज पे कैसे क्रिटिक्स, कैसे मूवी देखने के लिए पहले क्रिटिक्स चेक करते हो, गूगल पे रिव्यू चेक करते हो, दैट इज ऑल्सो क्रिटिकल रिव्यू। ऑडियंस का रिव्यू होता है, दैट इज ऑल्सो क्रिटिकल रिव्यू। गो फॉर दैट, थिंक ओवर इट, थिंक ऑफ न्यू आइडिया अबाउट। जैसे हमारे एजुकेशनल रिजल्ट होते हैं, कुछ एग्जाम वगैरह हम देते हैं, वो रिजल्ट आते हैं, वो भी हमें एक तरीके से बताते हैं कि हमें किन सब्जेक्टों पर और गौर करना है, कौन से सब्जेक्ट हमारे वीक है। एक तरीके से वो भी हमारा जो ओवरऑल सब्जेक्ट का स्टडी का बता रहे हैं कि आपको इन सब्जेक्टों में ध्यान देना है। वो भी एक तरीके से क्रिटिक्स ही कर रहे हैं। टीचर भी हमें वही इनपुट अगर देते हैं कि आपको इन सब्जेक्टों पर और फोकस करना है, आपके ये सब्जेक्ट अच्छे हैं, वो पॉजिटिव क्रिटिक्स अगर वो सब्जेक्ट अच्छे हैं, ये सब्जेक्ट में आपको मेहनत करना है, तो उस पर आपको और थोड़ा सा ध्यान देना है। ये I think एजुकेशनल क्रिटिक्स हैं। educational criticism starts itself from the nursery standard, when the teacher is trying to teach us how to write. From that time, she is too critical for us, so that we learn to write properly and nicely and neatly. So I think criticism of teachers is really important in our life, because we are because of them. Yeah. यस यस Yeah, even another negative was like politicians are also facing criticism from these news channels. That was also main thing. Yeah, it is crossing the limits. I feel that news channels, that was also one kind of criticism like politicians are facing. And another kind of criticism was like trolling. Trolling was also one kind of criticism now here. Like celebrities are facing some kind of criticism when it comes to trolling. So that was also thing. ऑनलाइन क्रिटिसिज्म हमें काफी ज्यादा देखने को मिलता है। किसी तरह का एक्ट होता है तो उस पे उनके कमेंट तो किए जाते हैं। ऑनलाइन में हमें सोशल मीडिया पे भी थोड़ा कंट्रोल करके क्रिटिसिज्म एक लिमिट से ऊपर जाता है तो वल्गैरिटी में आता है।
तो वो इंडस्ट्री में, हमें मूवी इंडस्ट्री में और पॉलिटिक्स में भी ये ज्यादा होता है कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म बहुत कम होता है, निगेटिव क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा होता है अपोजिशन पार्टी के लिए। उनके पॉजिटिव पॉइंट्स को उतना हाईलाइट नहीं करते, जबकि निगेटिव पॉइंट्स को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। और सोशल मीडिया, यस यस, Social Criticism media is. on criticism on Facebook is a very big issue among the teenagers because they get too self insecure, and then many teenagers are suffering from depression because they are not getting much likes and all this. So this is also a part of criticism. Earlier, when social media was not there, the criticism was from the people around us. But now, any unknown people who we don't know, they have fake IDs and they can also give any comment on anybody. Especially public figures are facing this problem. In This problem is they are facing this problem since long, and it is hard to deal with such kind of issues. Yes, And even also for a the misspelling in their post, they face such kinds of criticisms. Yes. Yeah, and also on the what they wear, how criticism. they talk, walk, everything. There is a opinion for from everyone to Yeah. everything that they do. नाउअडेज हम ये देखने को मिलता है कि लोगों का कुछ तो कॉमन से परसेप्शन बने हुए हैं, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय दे डोंट वर्क हार्ड, उनका ऐसा मानना है। वो ऑलरेडी क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज एंड देयर वर्क कल्चर। उनको उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ काम ही नहीं होता, तो वो उनके परसेप्शन बने हुए हैं। तो हमें इस चीज में भी ध्यान देना है कि ये उनको बताना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय आल्सो वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट, they are ready to play a part in a nation development। तो And ऐसा also करके I हमें ये think चीजों को भी हाईलाइट करना चाहिए। and also I think the criticism is much more important in the which company which are in the starting phase, so that they can give much more customer experience better. So, and also before we buying anything, we just first search which has better reviews or something like that. In this way also the critics plays an important role. I think critics play role in every field. Example, installing an app, we check reviews. For buying anything, we check reviews. And any company that is starting, they take feedbacks from us. They That is also like a critic. So critic is involved in everything. It's on us. Ultimately, it depends on every person to person. इसका निगेटिव इफेक्ट भी ये भी आता है, कुछ प्रोडक्ट मार्केटिंग करते समय कुछ पेड प्रमोशन होते हैं, उसमें यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर वगैरह और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जो उस प्रोडक्ट के पॉजिटिव पॉजिटिव को हाईलाइट करते हैं, निगेटिव को सप्रेस करते हैं। तो उन चीजों को भी देखना चाहिए कि हमें सभी पॉइंट मिले, हमें उसकी रिग्रेस एनालिसिस करके ही देखना चाहिए। क्रिटिक्स पे भरोसा करके उस चीजों को, प्रोडक्ट परचेज आइटम ये सब नहीं परचेज करना चाहिए। Right. Before we should adopt, then we should take advice from 2-3 people, and then we should focus you, as you said, like it would हाँ, be एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म में हमें जाना चाहिए ऐसी चीजों के right. लिए। yes, yes. Criticism has also is now also prevalent on the basis of whether you are old school or new school thoughts. Like if you are going and enjoying nightlife, then you are cool, and you will have more friends. You'll not get criticized that much. But if you are not into all this, then there's a lot of criticism you face nowadays. हाँ, It हमारे is कुछ true. वेयरिंग ड्रेस को, कपड़े को ऐसा कपड़ा पहनता है, Right. वो ऐसा है, ये सब चीजें भी नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली देखना Yes. चाहिए उसका सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन, अगर वो ठीक है तो उसमें कमेंट नहीं करना चाहिए, उसका खुद का भी इच्छा है। तो इन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। ऑनलाइन ऑनलाइन भी चीजें ज्यादा होती हैं ऐसा करके, ट्रोलिंग वगैरह, ये हाँ बहुत जी। इफेक्टिव है। Hmm. None is able to get the good points. बस खत्म. No one is able to get good points, right? Or group discussions किस-किसने? It is Shailesh first time and he's still able to contribute. Manish and Hemant are still quiet. The two girls, they are copying and you can say saying same points. I'll tell you all the things right now.
No one? बस खत्म? No one wants to continue? Education perspective, different fields हो गए. When to take, or you can say I can guide you in this कि how you need to handle the criticism. That thing you discussed? Criticism को कैसे handle करना चाहिए? When to let it go? सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट में अपने अंदर देखना चाहिए कि वो हमें है भी नहीं है. You guys could Just- discuss on those things also. And no one did on that also. Anyone with any other point? All the brainstorming ended? Aditi, Swarnima? No more good points? You should have plenty of this points also, plenty of, you can say, the topics, the headings. I tell you one good point of Swarnima, which I felt is, Swarnima, you're very good in what others were discussing. Aditi is very good in elaborating. She elaborates a point, right? Swarnima comes as she gives a token of the point, like she's giving a heading. I'll discuss all the points. One of you has to conclude. Hemant, you were to conclude, right? Yes, ma'am. Let's go for the conclusion then. Yes. And anyone with any other point, just speak up right now. Last 1 minute I'm giving up to you. And then I'll give you entire feedback of every person. Anyone with any point, or Hemant can conclude? Ma'am, you can conclude. Conclude? Okay, Hemant, go for the conclusion. Yes, ma'am. Okay, friends, I take this opportunity to conclude the discussion. Like all of us was discussing on the topic role of critics in the life. Some of our friends like Aditi have said that critics can be motivating and demotivating. It depends on the one other's perspective who says it one. And one of our friends, Warnima, said that criticism helps us in real life to improve our personality. At the same time, it also has a negative effect, like in what is going on in social media. And one of our friends, Silas, said that some kind of cinema criticism was going on, like in terms of government employees were facing like kind of criticism, like they were not doing anything and they were getting jobs or something. So what I feel was criticism should be, it was helpful in our life, but too much of anything was danger. So that was the main, I thought. Okay, fine. Now see, you guys need massive improvement in your group discussions. How many GDs you have attended so far? Tell me that frankly first. One. One. Shiraj first. One. Aditi first today? Of Vijender sir? Yeah. Second of mine, before it first, right? One only. Swarnima? Yes. Ma'am, 4. 4. Okay. And Manish? Ma'am, this Manish? is second day on second only. Second, right? It Or was third? at morning. Second only. Second. Hemant? It was fourth one, ma'am. Fourth one. Very Yes, good. ma'am. Swarnima and Hemant are competing. और इनमें से अगर फोर्थ में compete करेंगे तो बुरा किसने ज्यादा किया था? हेमंत ने. Hemant was quiet. Swarnima was still giving the points. Okay. Now let me tell you first thing. Whenever there is a topic, you have to figure it out. जब कॉपी पे लिखते हो ना, ठीक है, पहले पॉइंटर्स बनाने के लगा करो. इंट्रोडक्शन जैसे क्वेश्चन में आंसर बनाते थे, क्या करते थे? इंट्रो लिखते थे, ठीक है, उसके बाद क्या आता है उसका नेचर, रोल, कुछ ऐसी चीजें हम लिखते थे. आंसर टाइम के नहीं लिखते थे. नेचर लिखते थे. डेफिनेशन तो किसी ने बोली नहीं. सर यू वर गिविंग द हेडिंग. मैं पहले आप पे आती हूँ, राइट? You started with the self-introspective is there and open-mindedness is there, but you did not give your perspective in that. You started, good morning everyone, this is the topic of today, right? उसके बाद आपने उसकी definition दी. What is critics? Critics का हमेशा negative नहीं होते हैं. Have you seen critics हमेशा negative ही बताएंगे? Critics आपकी shortcomings भी बताते हैं, आपके कुछ अच्छे pointers को भी बताते हैं. Criticism और critics में difference होता है. There's always a difference between two things. ठीक है, उसको overlap मत करो. तो पहले तो आ जाता है रोल ऑफ क्रिटिक्स क्या होता है. तो स्वर्णिमा, यू वर टू डिफाइन इट आउट. लाइक टुडेस टॉपिक इज दिस एंड दिस. लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड लाइक क्रिटिक्स. They can give us, you can say they tell us about our shortcomings also or some of the very good points in us, right? And according to me, I am in the favor or against. वो आपने चीज नहीं बोली. सेम पॉइंट वही हो गया है ना. एंडिंग आपने की नहीं, अपना पर्सपेक्टिव दिया ही नहीं, जहां पे आपकी शॉर्टकमिंग स्टार्ट हुई. सेकंड, आई फेल्ट योर कॉन्फिडेंस लो एट द स्टार्ट. अगर इंट्रोडक्शन करनी थी उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था. Second, Aditi ने किया था पॉइंट. Aditi, your confidence was good when you tried to elaborate the same point. But आपने भी कोई अपना पर्सपेक्टिव नहीं दिया. You just told कि हमें क्रिटिसिज्म किससे लेना चाहिए. वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया. हेडिंग क्या चल रही थी? रोल ऑफ क्रिटिक्स इन अवर लाइफ. पहले उसका बताओ, पॉजिटिव रोल है, नेगेटिव रोल है. पॉजिटिव नेगेटिव पे डिस्कशन करो. आपके पॉइंटर्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे अगर ऐसे ही करोगे तो.
किसी ने पॉजिटिव नेगेटिव, पहले हम आते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या है. व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स? दे हेल्प यू नर्चर, दे हेल्प यू कैन से टॉक अबाउट. हमारे जो क्लोज वंस होंगे वो हमें क्रिटिक्स नहीं देते हैं कई बार, कभी हमें शॉर्ट कमिंग्स नहीं बता पाते हैं इतने ओपनली, बट दोज पीपल एक्चुअली टेल अस आउट एंड वी कैन गो फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऑल्सो. We can reliable, not we do not have to completely rely on them, but then they help it out is you can say in terms of open our eyes in some ways. हमें new directions देते हैं, कुछ ना कुछ participations को, कुछ चीजों को देखने की. तो different points है, 5-6 अच्छे points मिल जाने थे आपको उस पे. Then you could discuss, someone would have come कि I think that they have a very negative point. नेगेटिव पॉइंट कैसे आ जाता है वो आप डिस्कस करो कि demotivated, we feel demotivated, sometimes we are not able to do that activity again, राइट. अगर हमारे पेरेंट्स ही हमें क्रिटिक्स की तरह आके कर दें तो हम बोलेंगे कि ये तो काम हमसे हो ही नहीं सकता, एंड वी लूज ऑल द होप्स एंड ऑल दैट, वी बिकम पेसिमिस्ट इन नेचर. तो भी आपके पास पॉइंटर्स थे. ये चीज खत्म करने के बाद यू कुड मूव टू द नेक्स्ट. शैलेश, क्रिटिक्स अडैप्ट व्हेन नीडेड. आपका पॉइंट जो था, क्रक्स वाज द थर्ड पॉइंट, उसमें आपने सीधा डिफाइन कर दिया. आपने ये बताया ही नहीं कि क्रिटिक्स का आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट था, नेगेटिव इम्पैक्ट था. फर्स्ट किसी का अच्छा नहीं था एक्सेप्ट अदिति का, बिकॉज शी वॉज एबल टू गाइड इट आउट. एक्सप्लेन किया था अदिति ने, पर उसका भी प्रॉपर नहीं था बिकॉज अदिति ने अपना ये पर्सपेक्टिव नहीं दिया पॉजिटिव या नेगेटिव या किस डायरेक्शन में आप जा किस डायरेक्शन में रहे. क्लियर? वो चीज कमी थी. उसके बाद आ जाता है अगेन स्वर्णिमा, योर वाज देयर कि किड्स एज डिपेंडेंट, यू गिव अ न्यू डायमेंशन टू इट, राइट. Then you could have thought कि let's now discuss like what is the age dimensions, या kids पे कैसे उनका वो आता है, like what is the influence kids get, what is the influence adults get. तो उस पे आप सारे जाने डिस्कस कर सकते थे. ओल्ड एज को क्रिटिसाइज कर, जो ओल्ड एज है वो ज्यादा क्रिटिक्स की तरफ जाती है. दे एक्चुअली क्रिटिसाइज अस फॉर लॉट्स ऑफ थिंग्स बिकॉज ऑफ द जनरेशन गैप्स, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट इन थिंकिंग अप्रोच. वो चीजें आ जाती हैं. पेरेंट्स और इसकी की आ जाती है वो पर्सपेक्टिव. एक ना शैलेश ने मुझे लगता है पॉइंट दिया था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वाला, राइट. वो पर्सपेक्टिव और क्रिटिसिज्म में डिफरेंस रखो. वो पर्सपेक्टिव है, लोगों की सोच है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम नहीं करेगा. ये क्रिटिसिज्म तो नहीं है, क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा कोई आके गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जाके कि नहीं तुम क्यों नहीं काम कर रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, राइट. पर्सपेक्टिव जो आपका होता है और क्रिटिसिज्म होता है उसको डिफरेंस रखो, सेम मत करो. देयर यू लैक, राइट. वो पॉइंट गलत था बिल्कुल. और कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी जैसे कोई ऐसे डेरोगेटरी कमेंट नहीं करना, कभी भी नहीं करना. Sometimes even the person is not listening, and when it comes a derogatory comment, that you have a negative point to it, you cannot comment that out, right. तो वो चीज तो बिल्कुल ही छोड़ देना. उसके बाद आ जाता है हेमंत, you mentioned how to be disciplined, how to be in GD, right. तो be disciplined वाला जो पॉइंट था, that is like थोड़ा सा उसको ना मुझे समझ नहीं आया कि GD में कैसे डिसिप्लिन करना सिखाते हैं. That I could not understand. Can you elaborate? Ma'am, it is like if someone don't have critics, like everyone would, it would become like a debate actually. So if someone has an understanding also, it would be like they would understand each other's perspective and it could be a smooth move. That's my opinion actually. See, that you cannot. अब GD में आप लोग सारे बैठे हो, are you criticizing each other? No. You just tell the negative. मैंने वही बोला, पर्सपेक्टिव और क्रिटिसिज्म को डिफरेंस रखो, ठीक है. ओके, सो वेयर वाज हेडिंग इज कि पर्सपेक्टिव में और आपके जो दूसरी चीज आती है उसमें क्या डिफरेंस है, उसको मिक्स मत करो, ठीक है. डन. नेक्स्ट इज योर अदिति, यू शुड टेक बैक अबाउट इट. दैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू मेंट बाय दिस. आप बोल रहे हो ना कि यू शुड टेक सम पॉइंट्स बैक व्हिच यू शुड एडमिट. इसका पॉइंट स्वर्णिमा ने अच्छे से बताया था, आइडेंटिफाइंग क्रिटिक्स इज इंपॉर्टेंट, राइट. हेडिंग देना बहुत जरूरी है. स्वर्णिमा का एक बेस्ट पॉइंट है, शी ट्राइज टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड शी गिव्स द हेडिंग. वो क्या हो गया, पॉइंटर उसके पास चला गया, चाहे स्टार्ट आपने किया था. तो इट इज नॉट अबाउट द पर्सन हु स्टार्ट्स, इट इज अबाउट द पर्सन हु गिव्स गुड पॉइंटर्स, ठीक है. तो उस पे मत जाना. और स्वर्णिमा, दिस इज वेरी गुड, यू कैन से एबिलिटी टू गेट द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग. और जैसे ही पता क्या करा करो, अगर आपको कोई पॉइंटर्स दिख रहा है, किसी ने कोई अच्छा पॉइंट दिया, जैसे एक शैलेश में है, शैलेश क्या करता है, सीधा पॉइंट बता देता है क्या मतलब है. वो ना उसकी हेडिंग देता है, ना कोई उसको वो करता है, कोई डायमेंशन देता है. यू गिव इट अ डायमेंशन एंड दैट इज पॉजिटिव पॉइंट विल बी एडेड टू यू एंड नॉट टू शैलेश, ठीक है. तो पहले याद रखना कि मैं अगर पॉइंट दे रही हूँ ना, मैं कोई डायमेंशन दे रही हूँ तो मैं उसकी ही स्टार्ट करूँ, मुझे वो पॉइंट मिले, मुझे स्टार पॉइंट मिले.
किसी और को मत मिले, ठीक है? Yes. उसके बाद स्वर्णिमा ने फेसबुक पे स्टार्ट किया थी सोशल मीडिया, दैट वाज ओके, यू गाइस वेंट इन अ सेम लाइन, तो कॉपी करने वाला हो गया था एक चीज को दूसरी चीज को, वो क्योंकि मैं पर्सपेक्टिव मैंने ही आपको बताया था ये चीज को स्टार्ट कर लो, ठीक है? उसके बाद क्रिटिक्स इज डिफरेंट, ये शैलेश का गलत पॉइंट था। एंड देन आई टोल्ड अबाउट अदिति's, या अदिति यू केम बैक टू रिव्यूज वाला फिल्म रिव्यूज, आई थिंक इट वाज स्टार्टेड बाय मनीष। मनीष आपने स्टार्ट किया था एट द वेरी स्टार्ट? नहीं मैम, शैलेश ने स्टार्ट किया था, मैं उसको सिर्फ एक्सटेंड किया था। Okay, I find it like you started out. Okay. And शैलेश, एक जो YouTube इन्फ्लुएंस वगैरह वाला पॉइंट था ना, ये अगर बोलना था तो जैसे जब अदिति और स्वर्णिमा ने बोला था ना सोशल मीडिया वाला, तभी टारगेट करो। ये नहीं होता कि उस टाइम पे खत्म होगी है बात, उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वाला बता दिया, फिर उसके बाद आप दोबारा टारगेट कर रहे हो। इट इज लाइक यू आर मिसिंग इट आउट, आपको कन्वर्सेशन समझ नहीं आ रही है। तो यू शुड बी वेरी अटेंटिव व्हेन यू हैव टू स्पीक अ सर्टेन पॉइंट, और डू नॉट मेक अ पॉइंट, ठीक है? इट शुड बी इन दैट रन, क्लियर? तो कभी भी ये नहीं करना और बाद में उठ के नहीं आना, इट वुड बी लाइक द पर्सन हैज नॉट एनी अंडरस्टूड एनीथिंग एंड नाउ ही इज गिविंग अ गुड पॉइंट। उसके बाद आई फाउंड इट आउट एज, सी आई गिव यू अ ब्रीफ इट आउट। अब इसको हैंडल कैसे करना था, रोल ऑफ क्रिटिक्स इन लाइफ, whenever you have a topic, go for some of the definition, then you go for a generic ID, then you go for your perspective, then you start with the positive or negative points. अगर तो पॉइंटर आता है, मैं नेक्स्ट में आपको कोई टॉपिक दूंगी, उसमें पता है कौन कौन सी चीजों को टारगेट करा करो। गवर्नमेंट को टारगेट करा करो, यूथ को टारगेट करा करो, किड्स को टारगेट करा करो, ठीक है? फैमिली के लिए, मतलब अब इसी को मैं आपको मिला के करा सकती हूँ सब कुछ नेचर के लिए, ठीक है? क्रिटिक्स में आ जाता है, आपको क्या करती है सरकार, कैसे करती है, गवर्नमेंट को कैसे क्रिटिसाइज करती है, हमें उसका गवर्नमेंट का कुछ इतना पॉइंट नहीं बनेगा। इट इज जस्ट आपको पता चलेगा गवर्नमेंट के बेसिस में रिव्यूज होते हैं, क्रिटिकल अवार्ड्स होते हैं, ठीक है? कि कहीं हमें सही क्रिटिसाइज कर देगा, सही डायरेक्शन में दे देगा, तो हमें इंप्रूवमेंट मिल जाएगी। फैमिली के बेस पे क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट, यू कैन से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हेन योर पेरेंट्स गाइड यू समथिंग एंड योर यू कैन से बाहर का कोई पर्सन गाइड करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर पेरेंट्स गाइड करेंगे तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगेगा, क्लियर? So that is how you take the criticism from the first person, which person you have to take the criticism. Third is, आपको मैंने बोला कि आप अपने बच्चों में देखो, आपने जैसे पॉइंट बोला था किड्स का, राइट? तो एज का भी आ जाता है, how you can say the adults under 18, they take it as a very bad and they are getting committed, you can say they are committing suicide. Every time we are hearing some or the other news. Why? Because किसी ने सोशल मीडिया पे कमेंट डाल दिया था और उसके बेसिस पर उसने सुसाइड कर दिया। इस पे आई थिंक प्रॉपर एक सीरीज भी बनी थी, इफ यू हैव सीन दैट सीरीज, आई डोंट रिमेंबर इट आउट। किसी ने कमेंट किया and the person actually burned the girl, right? So there are number of you can say series on this also and even episodes on us कि criticism कैसे negative impact भी कर रही है, critics कैसे negative impact भी कर रहे हैं। लास्ट में आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट में जैसे आप क्या जाते हैं एंटरटेनमेंट की पर्पसेस के लिए, एंटरटेनमेंट में क्रिटिसिज्म कैसे हेल्प करती है। आप वही रिव्यूज देखते हो, मूवी का पहले ट्रेलर देखते हो, रिव्यू देखते हो, तभी आप जाते हो, नहीं जाते हो, ठीक है? कोई ऐप है, नेटफ्लिक्स है, उसका कोई आप देखते हो स्टार रेटिंग कौन से चल रहा है, सीरीज कौन से चल रहा है, उसको देखोगे, बाकी नहीं देखोगे। That is also critics review, right? उसके बाद when, what is the impact of criticism, how to let it go, when to let go the criticism, या फिर how to handle what the critics are actually telling us. Handle कैसे करना है, पहले सही पर्सन से सुनना है। सेकेंड is हर सिचुएशन को सब्जेक्टिव नहीं लेना, हर क्रिटिक्स मेरे लिए नहीं है, it can be generic also, उस तरह से भी सोचना है। थर्ड is whenever someone is saying us negative point, note it down in the diary, कैसे अपने टेम्परामेंट को, एंगर को कूल करना है। तो देयर आर मल्टीपल वेज हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म, वो नेक्स्ट पॉइंट बन जाता, नेक्स्ट डायमेंशन बन जाता। आप लोग का सेकंड या फर्स्ट ये है, तो आई एम गिविंग यू गुड टाइम, अंडरस्टैंड द सिचुएशन, ट्राई टू प्रैक्टिस इट मोर। आई फाउंड ओनली Aditi's explanation today is good and Swarnima's your point is good, that's it, right? उसके सिवाय मुझे शैलेश योर इट वाज गुड कि आपने स्टार्ट अच्छा किया है, कोशिश की है, तभी बहुत इंप्रूवमेंट है। मनीष यू वर वेरी क्वाइट, हेमंत इट वाज नॉट द फोर्थ वन, आई कुड नॉट सी इट आउट, ठीक है? तो कॉन्फिडेंस थोड़ा रेज करो, यू शुड नॉट बी लाइक एंड चेंज योर, यू कैन से सम काइंड ऑफ हैंड जेस्चर्स, यू ऐड इट आउट, अपने पॉइंटर्स, अपनी चीजें ऐड करो, अपना बेस्ट दो, बाकियों का ना मत देखो, ठीक है? और हेमंत एंडिंग अच्छी नहीं थी, हेमंत ending should be like every person gave different perspectives, right? So you should be like that. Today's topic of discussion, it went really well. And we had a lot of discussion on the positive points, negative points. You can say Swarnima was giving some of the good points related to it. Aditi was not in favor of it. Shailesh talked about some kind of a critical review, movies review. Even Manish participated in it. Some of this. But at the end, I would like to conclude this journey that the role of critics is really, you can say, very important in our life. And it is how we see it out. The perspective of the person matters. If we take it in a good manner, it can help to improvement. If we take it in the bad run, people can even commit suicides and all that. So how to handle the criticism and how to let it go, that is something we should learn from group discussion. That's all.
क्लियर? जिसमें आप एक समराइज और कॉन्फिडेंस लेवल से करना उसको. Any problem to anyone now? Ma'am, if you are not getting about anything, then what we should do? Means If you're not on what getting point, about, broader points for like anything topic is given, on what points, generic point we should analyze or we should correlate with them. वही मैं बोल रही हूँ. जैसे आज तो मैंने दिया था क्रिटिक्स वाला, जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव था. मैं आपको एक टॉपिक देती हूँ जिसका सपोज करो ग्लोबल वार्मिंग है. ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इज सिंपल टॉपिक लाइक दैट. उसमें भी वही आ गया, सेम टारगेट क्या किया, डेफिनेशन किया, फैक्ट्स में मत जाना, एग्जांपल्स पे चले जाना, कैसे कैसे इंप्लीमेंट कर रही है. आपको ये तो पता है ना पॉल्यूशन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, दिल्ली में बहुत हो रहा है, कुछ ऐसे एग्जांपल्स दे देना जो रैंडमली आ जाएंगे. फिर अब किड्स को, मैंने ये बोला था 4-5 चीजें, सरकार क्या कर रही है, यूथ क्या कर रहा है, किड्स को कैसे इंपैक्ट कर रही है. ठीक है, हमारा जो आप एक जेनरिक बोल सकते हो, फैमिली लाइफ कैसे डिस्टर्ब हो रही है, एम्प्लॉयमेंट कैसे डिस्टर्ब हो रही है. ये 5-6 चीजें टारगेट कर लो, इसको नोट कर लिया करो. एम्प्लॉयमेंट हो गई, यूथ हो गया, किड्स हो गया, और दिस गवर्नमेंट हो गई. ये चीजें तो डालनी है हर एक में. चेक कर लिया करो, डल रही है, नहीं डल रही है तो कोई और पर्सपेक्टिव होगा. I'll tell you number of things, the more the session goes, how to actually attend it out, right? जैसे मैंने आज एक generic दिया था, कल एक और difficult दूंगी, so according to your range, and please go for improvement. I want a massive improvement, right? Yes. Yeah? Chalo, tomorrow we will have it. What is time comfortable for you? Afternoon or evening? Afternoon for me. Everyone, afternoon is okay? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Chalo, okay, we'll meet tomorrow afternoon. Tomorrow Yeah, exam Manish? is there. Which? Exam is there. Which exam is that? Yeah.